recap. So I just came back from gym. So अभी नहा के निकली हूँ, so इस वजह से अभी ऐसा लग रहा है मैंने कोई स्किन केयर स्टेप भी अपना फॉलो नहीं किया है. By the way, I wanted to update you guys. So we are going on a trip. So it's like a last minute trip. हम लोग पहले कहीं और जाने वाले थे, but actually that plan got cancelled. We wanted to go to some other country, but because of some weather issues, we couldn't make it. So we cancelled that plan. But अभी आज gym जाने से पहले we were discussing that it's Thanksgiving, a super long weekend. So we should definitely go out somewhere, and then we decided to go. And it was like a last minute plan, and then I went to gym. Now I came back. I'm gonna go make my dinner and then start packing क्योंकि बिल्कुल ही लास्ट में डिसाइड हुआ है. तो I really don't know. मैंने अभी तक कुछ सोचा भी नहीं है कि वहाँ जाके where I'm gonna go and what places I'm gonna explore. So maybe on the way I'll see कि क्या करना है क्या नहीं करना है. But yes, food I'm definitely gonna try out. But yeah, so I'm just gonna go and make my dinner and then start packing. So I just wanted to update you guys again. It's like a last minute, trip. It always happens here. It always happens here. Especially with my family, we always make last minute trips. So लेकिन इस बार वाली थोड़ी लंबी trip हो रही है. But I'm so excited because since I moved to US, this is going to be my first international trip after moving here, because in between COVID happened and then we couldn't go to another country, and then later we did went to LA and Vegas. But abhi finally it's going to be a first international trip since I moved here. So I'm super excited. So yeah, let's go. I'm just gonna sleep early today because हम अपनी journey कल सुबह जल्दी start करेंगे. And by the way, we're going by the road. So I'm excited. I always love road trips rather than flying somewhere. मुझे ऐसा लगता है कि when you go by the road, you explore so many different things. So that's why I always love road trips. So I'm gonna make sure I vlog everything out and show you guys what I'm gonna do. I'm still not sure what I'm gonna do, but let's start and let's see what I'm gonna do. साथ में मैं सब कुछ अपना shoot करूँगी. Alright, so I'm gonna go and start packing and have my dinner. I'll see you guys tomorrow early morning. Guys, so it's 5:40 here, almost 5:40. हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 3 बजे निकलेंगे, but God knows मैं तो उठी 3:30 बजे हूँ. फिर उसके बाद नहाया धोया, अभी थोड़ा बहुत खाया है. पैकिंग भी मैंने सुबह में की है. नॉट ओनली मी, ट्रस्ट मी, एवरीवन, मेरे घर में सब ने पैकिंग अभी सुबह में की है, क्योंकि जैसे मैंने बोला लास्ट मिनट ट्रिप थी, तो हम लोग ने सब कुछ प्लान उस तरीके से नहीं कर पाया. एंड बाय द वे कल रात तो मैं सोई भी 1:30 हूँ, क्योंकि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क्स वगैरह देखना था, क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल नाउ, राइट. तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो भी पेपर्स वगैरह थे वो मुझे देखने थे. तो 1:30 सब कुछ करके फिर मैं सोई हूँ. 3:30 बजे उठी हूँ, फिर अपना पैकिंग वैकिंग किया है मैंने. सो दिस इज़ मी नाउ. आई एम रेडी, अबाउट टू लीव. हम लोग निकलने वाले हैं अब. थोड़ा सा मैंने ब्रेड वगैरह खा लिया, कुछ एसिड नाश्ता नहीं किया है. मे बी ऑन द वे करें. आज पूरा दिन वैसे हमारा ट्रैवल करने में निकलने वाला है. सो लेट्स गो. बस यही बताना था. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप, क्योंकि जुलाई के बाद हम अब जा रहे हैं, जब हम लोग LA और वेगस गए थे. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. सो लेट्स गो and let's start our journey. So by the time we started our journey, it was super dark and I was feeling so sleepy because last night I didn't sleep well. Like I mentioned, I was doing all the paperwork. So I always, like, whenever I wake up, I always go get my coffee. And I think for this trip also, I was so much craving for my black coffee and for my sleep. Hey guys, so right now it's 7:54, so almost 8 AM. बीच में मैं आई थिंक सो गई हूँ. मैं मम्मी के लैप पे अपना सर रख के मैं आराम से सो गई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं रात में सो नहीं पाई थी. अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमने अभी आई थिंक कितने बजे 6 बजे के करीब जर्नी स्टार्ट की, तो अभी तो एक डेढ़ घंटा ही हुआ है हमें. तो अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं. बट अब क्या है कि अब आई रियली नीड अ कॉफ़ी. तो अभी वी विल स्टॉप एट स्टारबक्स एंड आई हैव अ क्रोसेंट और ब्लैक कॉफ़ी. अभी वैसे बाय द वे हम एक गैस स्टेशन पे रुके हुए हैं गैस भरवाने के लिए, और अगर किसी को फ्रेश होना है. तो मैं बीच में सो गई थी. मेरी शक्ल से आप लोग को देख के लग ही रहा होगा मैं अच्छा खासा सो गई थी. अपना नींद मैंने पूरी की है. पूरी नहीं, मतलब कहने का मतलब टुक अ रेस्ट, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं हुई थी. Okay, so I got freshened up and now, like I said, we're going to be stopping at Starbucks to buy coffee. तो फ्रेश हो गए, अब चलो गाड़ी में बैठते हैं.
Alright, so I've been driving for like 1.5 hour और अभी हम लोग बेकर्सफील्ड पहुँचे हैं। यहाँ से एलए के लिए हमें 2 से ढाई घंटे लगेगा। ट्रैफिक बीच में मिला था, उसके बाद अभी तो फ़िलहाल ट्रैफिक नहीं मिला है, उतना आराम से ड्राइव कर पा रहे हैं। बट जहाँ हमें जाना है इट्स लाइक अराउंड 4 to 4.5 hours फ्रॉम बेकर्सफील्ड। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय 3 o'clock और 4 o'clock वील बी देयर, अगर हम ज़्यादा नहीं बीच में रुकते हैं। सो राइट नाउ वी हैव स्टॉप्ड एक जगह है बेकर्सफील्ड में विच इज़ कॉल्ड पंजाबी ढाबा। सो यू नो हम लोग बाहर जाते तो हमेशा पंजाबी रेस्टोरेंट्स और ढाबा ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पे ये जगह है, इसका नाम है पंजाबी ढाबा। हम यहाँ पे रुके हैं जस्ट टू गेट फ्रेशन अप और रेस्टरूम्स वगैरह जाने के लिए, चाय वगैरह अगर किसी को पीनी है, तो इस वजह से हम यहाँ रुके हैं। सो अभी तो मैं ही ड्राइव कर रही हूँ। आई थिंक थोड़ा आगे तक मैं ही ड्राइव करूँगी, अभी मैं इतना थकी नहीं हूँ। वो थोड़ा मुझे एक्टिव भी रखता है, इस वजह से मुझे ड्राइव करना ज़्यादा पसंद है। सो ऑलराइट, हम जस्ट गोना गो स्टार्ट ड्राइविंग अगेन एंड आई थिंक वी विल बी स्टॉपिंग एट अनदर प्लेस। Alright, so quick stop here at Little India. So हम लोग को भूख लगी हुई थी पर हमें समझ नहीं आया कि कहाँ खाना, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं रुक लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने यहाँ से खाया था। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली वी थॉट कि क्विकली यहाँ पे हम लोग लंच करके फिर वील स्टार्ट अ जर्नी अगेन। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सेम जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम खाया था। तो अभी सब लोग उतर गए हैं, लेट्स सी क्या लेते हैं, बट जल्दी पिकअप करके एंड देन वील स्टार्ट अ जर्नी अगेन। मैं 3-3.5 घंटे से ड्राइव कर रही हूँ और अभी यहाँ से भी आगे का जो ड्राइव है वो 2.5 घंटे का है। तो लेट्स गो एंड क्विकली खाते हैं। और आई थिंक मैं सेम ही जगह पे जाऊँगी जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम खाया था। आई एम एग्जॉस्टेड पहले ही, क्योंकि मैं 3-3.5 घंटे से ड्राइव कर रही हूँ। मेरी कमर और मेरा बम दोनों बहुत दुख रहा है। सो लेट्स गो। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन हियर मी और नॉट, बट इतना अच्छा लग रहा है ना वहाँ पे जाके यहाँ पे। एंड देन आई मीन पुरानी चीज़ें, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हम लोगों ने यहीं से खाया था, तो अभी वो ही याद आ रहा है। एंड सो हैप्पी कि हम लोग यहाँ पर आके खा रहे हैं। हमने बाय द वे मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है, उन्होंने मुझे दिया है। सो जितनी देर में भी अवेलेबल होगा वील पिकअप एंड देन वील गो। मैंने पानी पूरी कराई है जो हम लोग यहाँ पे खाएंगे, मैं और मम्मी, और बाकी जो है खाना वो हमने टू गो के लिए करवाया, तो वो हम लोग गाड़ी में खाएंगे। सो अभी बस हम वेटिंग फॉर माई ऑर्डर। डैड पीछे बैठे हैं, मॉम और मेरा भाई दे हैव गॉन टू पिक अप फ्यू आइटम्स रास्ते के लिए। ओके, लंच हो गया है। सो नाउ वी बिगिन अ जर्नी अगेन। आई थिंक इस बार मैं नहीं चलाऊँगी, इस बार आई विल आस्क माई ब्रदर टू ड्राइव, क्योंकि मैंने बहुत देर पहले ही चला लिया गाड़ी। तो अभी इस बार मैं नहीं चलाऊँगी। और बाकी हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो बचा हुआ फूड था उसको पैक भी कर लिया। So we left LA, we did a quick lunch from our favorite spot in Los Angeles, and then we started a journey again. Now the next big stop was going to be San Diego, and trust me guys, we found so much of traffic. And you know, as I said, it was a Thanksgiving holiday, so there was so much of traffic, but I'm glad that we stopped at Little India and we had a lunch, because if we wouldn't have done that, we would have been stuck in the traffic without, you know, eating anything, and we would have been starving. All right, the weather was in our favor. It was really beautiful, not too windy and not too cloudy and not too cold as well. It was like a bright sunny day and the weather was doing amazing. But yes, there was so much of traffic, and you know, if traffic wouldn't have been there, we would have reached a location earlier, but because of so much traffic we got delayed. But I mean, we were actually enjoying it. We did talk a lot, we shared all the good memories in the car. We were actually talking with each other and we spent time a lot during the traffic as well. It was not like too hectic, and then it was not like we were stuck in traffic and then we were feeling like, oh my god, itna traffic mil gaya. We were actually enjoying that jitna bhi traffic tha, kyunki wo ruka hua traffic nahi tha. It just kept on moving, but the speed was really slow. Alright guys, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बताओ मुझे आइडिया था, क्योंकि
क्योंकि एक तो हॉलीडे है बट कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। अभी यहाँ से सैन डिएगो भी 1 घंटा है और फिर जहाँ हमें जाना है वो आगे 30 मिनट्स और है। सो 1 आवर 30 मिनट्स 1 आवर 40 मिनट्स यहाँ से और लग जाएंगे। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे हम रेस्ट एरिया में रुके हैं थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए, क्योंकि बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है एंड आई नो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द थैंक्सगिविंग वेकेशन, मतलब हॉलीडे की वजह से। बाकी यहाँ पे इतनी एज सच ठंड नहीं है, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। बे एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है बट यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। मैं बिना जैकेट के हूँ, बस नॉर्मल टी शर्ट पहनी है मैंने। सो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मेरे डैड बाय द वे रेस्ट एरिया में गए हैं, मतलब रेस्ट रूम गए हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे पार्किंग लॉट में खड़े हैं। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं, बट राइट नाउ इट्स इट्स 3, इट्स अबाउट टू बी 3, 2:55 हो रहा है। सो आई थिंक बाय 5 हमें पहुँच जाना चाहिए। अगर और ट्रैफिक भी मिलता है तो 5 बजे तक तो आई थिंक हमें पहुँच जाना चाहिए। आफ्टर टेकिंग द रेस्ट वी बिगिन अ जर्नी अगेन एंड देन वेरी सून विदिन लाइक 30-40 minutes we reach Santiago, and then from Santiago the international borders for crossing from USA to Mexico was like 30 minutes by road, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, हम फटाफट से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी पहुंच गए। ये बाय द वे दिस इज़ अ साइन विच इज़ सेइंग दैट यू शुड लाइक दिस इज़ द मैक्सिको बॉर्डर इज़ अप्रोचिंग, एंड देन वी ऑल्सो सॉ अनदर साइन जहाँ पे लिखा था कि देयर इज़ नो यू टर्न फॉर USA। सो पहले बहुत ज़्यादा वार्निंग्स भी थी कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू द रॉन्ग रूट प्लीज़ मेक श्योर यू टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर, क्योंकि अगर आप सीधा एक रूट पे जाते जाओगे इट्स गोना टेक यू डायरेक्टली टू द मैक्सिको एंड देयर इज़ नो यू टर्न कमिंग बैक टू द USA। सो लाइक यू कैन सी राइट नाउ हियर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और एक साइड लिखा हुआ है कि यू नो यू टर्न फॉर USA। सो आई मीन दे ट्राई टू वार्न यू बिफोर यू आर गोइंग टू एंटर Mexico. Well, we did our immigrations and there was this huge line. I'm glad that there was not too much of traffic. We were very easily able to get into the line where they scan your cards, they check your number plates, they see how many members are sitting, and then they check your passport, your green cards, or if you don't have a green card for US, then they check your passport and then your visas and everything, and then they let you in. So recordings and cameras were not allowed here, but secretly I somehow recorded few things, because during the immigration you are not allowed to take any pictures, you're not allowed to record anything. The window which we were crossing, like when you're sitting in the car, they actually take your pictures beforehand only, that who is actually entering into their country. वो आपको अपना विंडोज़ नीचे भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर से ही आपकी पिक्चर्स ले लेते हैं, and then you have to be very very like I mean, आपको अगर आपने hat पहना है, you have to remove your hat. If you're wearing a sunglasses, you have to remove your sunglasses. So once the immigration was done, I know I couldn't take a footage there because it was not allowed. So once we actually got through our immigration, we entered Mexico, and then we were in Tijuana, Mexico. Like within 15 minutes, everything was done. And then we straight went to a hotel, which was Hyatt, Palace. वहाँ गए हम लोग टिवाना में, एंड कैन यू बिलीव देयर इज़ लाइक ओनली वन हयात इन टिवाना, और फिर दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी नियर बाय बॉर्डर्स। तो वी वेन देयर, वी गॉट फ्रेशन अप, एंड देन हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा। सो वी जस्ट रीच्ड अपने होटल में। हम लोगों ने पहले से अपना बुकिंग्स वगैरह कर रखा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा नीचे लॉबी में। जस्ट टुक अस लाइक 5-7 मिनट सब कुछ ख़त्म करने के लिए, अपना मतलब रिजर्वेशंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। अभी वी गोना गेट फ्रेशन अप, फिर हम लोग डिनर के लिए बाहर निकलेंगे, एंड देन आई एम सुपर टायर्ड, सो आई डोंट थिंक सो आज हम कहीं घूमने जाएंगे। तो जो भी घूमेंगे वो हम कल घूमेंगे। तो अब हम रात में बैठ के लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सो आई विल कैच यू गाइस सून। अभी आई एम जस्ट गोना गो एंड फ्रेशन अप।
Nice. Very good. Very Thank you so much. Everything is Okay, so we have stopped at this Mexican restaurant. यहाँ पे डिनर के लिए हम लोगों ने सोचा नहीं था, बट हमें काफ़ी अच्छा लगा, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ रुकते हैं। अभी तक तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। ड्रिंक्स हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए हैं, खाना भी ऑर्डर करेंगे, बट अभी तक हमें बहुत अच्छा लगा। Alright guys, so we are done with our dinner. अभी हम लोग वापस होटल में आ गए हैं. Now I need to sleep and relax. So I'll see you guys tomorrow. Bye. Good night.